Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year class, chapter number 12 is in progress, and today we are going to start exercise 12.3, uh, in which we will solve the right angle triangles. But now these are word problems, and we will make diagrams ourselves. And especially we are to deal with angle of elevation and angle of depression. So let us see first of all what are angle of elevation and depression. The angle between horizontal ray through eye and the ray from eye to object above the horizontal line. This word above is very much important here, and in it this definition is different from your book. This is such a definition that you can write it without diagram, but in your book, the definition that is written, then you need to use diagram. But we will use diagram as well for the sake of understand. Here word above is important, so I have highlighted it. I have used another color, and this angle is called angle of elevation. Now you need to understand what do you mean by horizontal ray. So let us see. This is the horizontal ray, the ray which is along horizontal, or you can say that the ray which is along x direction or x-axis, that is called horizontal ray. And this is the ray from eye to object. Now I have used this to show the eyes. This is point O as well, and you can see that here we are standing and we are looking at an object which is above the horizontal line. This is the ray which is through our eye along horizontal direction, and this is the ray from eye to, and at this point there would be object, as you do in case of kite flying. You are standing in the ground and you are looking at the kite which is above, high above. Means you are looking at a thing or at an object which is above the horizontal level. By writing the names, so here look at this. B is representing the object, means object is at this place, at point B, and this point B is above this horizontal line, means above the or high from the, at a height from the horizontal line. This is horizontal line. Then is angle of depression. Really it is depression. The angle between horizontal ray through eye and ray from eye to object below the horizontal line is called angle of depression. Definitions are same, but only one word is different. This above and below. If you write the same word below, then it becomes angle of depression, and if you write the word above there, then it is the angle of depression. Sorry, in case of above, the angle of elevation, and in case of below, it is angle of depression. If suppose if you are standing at your roof and you are looking at something in the ground, this is the horizontal ray here, horizontal ray. I have made these diagrams separate. In your book these diagrams are combined, but I have made these separate to understand in a better way. Again,
Now this is the eye level. This is the eye level horizontal line. The horizontal line through eye, and the ray from eye to now object is below. Now here C is the point at which the object is, and you can see that the C point is below the horizontal line. So in this way, these are two angles of elevation and depression, and I have quoted the examples as well. If you do kite flying, then you are standing at ground level and you are looking something high from your eye level, and if you are standing at your roof and you are looking at ground, then these are the angles of elevation and depression. How to use them, you will see in the questions. Look at question number 1. Now these are the questions, those are included in the smart syllabus. A vertical pole is 8-meter high and length of the shadow is 6 meter. What is the angle of sun at that moment? Now we are talking about pole and we are talking about its height and shadow, but here the demand is for the angle of elevation of sun. Obviously sun is at higher level than the horizontal level, so it would be the angle of elevation. So if the angle is written over here, only then you means angle of elevation. So what to do? We need to draw this pole. This is the pole. The pole would be in this way. You have seen poles in your daily life. Then obviously the shadow is at ground. If pole is standing here, then its shadow is at ground. And to find the angle of sun, obviously when the rays from the sun, they are at object and they reaches to our eye. This is the eye level. You know that the eye level is taken as horizontal level. When the sun rays strikes with object, then this object is seen to us and the ray reaches to our eye. So in this way, this angle would be the angle of sun at that moment when the pole is 8-meter high and its shadow is 6-meter long. So by renaming the points and pointing out the angle, this is the angle we are to found, this one. And if we say that it is the angle theta, then we are to find now angle theta here. And you can see that it is a right angle triangle. I have shown it by this symbol. If the symbol is of such type, then it shows right angle triangle, and it is right angle triangle with right angle at point B. Now we need to look at the necessary things. Let height of the pole we have taken ourselves, we have represented it by AB, so it's mere AB equal to 8 meter. Length of the shadow has been represented by BC in the figure, which is equal to 6 meter, and theta be the required angle of the elevation of sun. Then in right angle triangle, now we are going to use the same trigonometric functions to solve it, and we need to look at only what we are to find. We will use only that specific thing. We don't need to solve this triangle for the all missing elements. Now here theta is missing for this question, so we will find theta, and as these two sides are given 8 and 6, so we need to use tangent theta is equal to 8 by 6. As AB is 8 and BC is 6, you can
write on your copy yourself that it is 8 and this one is 6. So obviously perpendicular over base will become tangent theta, and from there theta is equal to tangent inverse of 8 over 6, and theta is equal to 53 degrees 7 minutes and 48 seconds. In this way it is the answer. And you may write one line more, that hence required angle of sun at that moment is equal to 53 degree 7 minutes and 48 seconds. Hope to understand. Now look at the next statement. At the top of a cliff 80-meter high, the angle of depression of the boat is 12 degree. How far is boat from the cliff? I have chosen here now a question in which there is an angle of depression. So how to make it? First of all, it is a horizontal line because it is along x direction. Then it is another horizontal line, and as you can see these are two parallel lines, so both these angles would be equal. Actually angle of depression would be here, as you seen in the definition, that if it is horizontal line and the boat is at this point, you are looking, this is the top of the cliff, this is the top of the cliff, and you are seeing the boat which is at this point. So this is the ray which is from eye to object, and it is the horizontal line through eye. Here we are above and the object is below, so there would be angle of depression, but it is not easy to solve it in this way, so we will take another line, horizontal line, and we will complete the right angle triangle here. And this is showing, this line is showing the height of the cliff. Obviously the cliff would not be of this type, but as we are to take the height, and height is taken at right angle always, so we need to make the right angle. Now by writing the names A, B, C and D, and showing the right angle, and then showing this angle. Actually this is the angle of depression, it is 12 degree, and obviously it would also be 12 degree. I was talking about that these are two parallel lines. You can say both are horizontal lines. So if a transversal line intersects them, then angle on the opposite sides are equal and they are called alternate angles. It can be written in this diagram which I have made below to make it clear. These are two horizontal lines, parallel lines, and the third transversal line is cutting them, and in this way there are two angles, this angle and this one. These two angles are on opposite sides and both are interior angles. अंदर बन रहे हैं ना, इसलिए इनको हम alternate angles बोलते हैं. Obviously आपने मैट्रिक में ये पढ़ा होगा थ्योरम्स में, तो उसी को हमने यहाँ यूज किया है. एक्चुअली डायग्राम जो आपकी बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी जैसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन में बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका बैकग्राउंड ये होता है. तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी. तो एज 12 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो मेरे एंगल ACB इज इक्वल टू 12 डिग्री विच इज इक्वल टू DAC. दिस इज द ACB, दिस whole angle ACB, and it is DAC. Both these are equal to 12 degree. These are equal because these are alternate angles. I have made you clear here.
Then again we are having a right angle triangle, and what we are to find, we are to find the distance of cliff and board. This is the cliff and this is the board. It means we are to find BC here. Height of the cliff is represented by AB here, which is 80 meter. Distance between cliff and board is equal to mere BC, and I have taken it X. By using trigonometric functions, this 80, which is perpendicular, and this BC is base, which is X. 80 over X is equal to tangent 12. And then by putting the values and simplifying, I have shifted this X onto the other side and 12 onto this side. But I have not written degrees again and again. Obviously, we are dealing in degrees here. So if there is missing anywhere, then you need to understand that these are degrees. So after simplification, X becomes 376.37 meters. And you may write one more sentence, as there was no space to write in my slide. You can write yourself that distance between cliff and board equal to 376.37. As I have represented it by X now, so if I find X, then obvious is the answer that it is distance between cliff and board. Now look at one more question. A kite, it is question number 5. A kite flying at a height of 67.2 meter is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 to the horizontal. Find the length of the string. Look at the diagram. देखिए जी, काइट फ्लाइंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया है। ये आप अपनी डेली लाइफ में सब लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में किया ही होगा। तो आप जब भी काइट फ्लाई करते हैं तो बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं जाता। ये नहीं है कि आप नीचे खड़े हैं तो आपके बिल्कुल हाथ के एन ऊपर होगा, ऐसे नहीं होता। बल्कि ये जो यहाँ आप खड़े हैं पॉइंट ए पर और काइट आपका जो है वो बी पर होगा। तो ये वो स्ट्रिंग जो कि डोर आप इस्तेमाल करेंगे, जो आप डोर बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही जालम होती है, उसको एल से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। तो ये ए बी जो है ये काइट के स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंगल ऑब्वियसली काइट ऊपर है, आप नीचे खड़े हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, आपकी फिगर इस तरह से बन जाएगी, सिंपल फिगर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एंगल उसने आपको दिया हुआ है 55 डिग्री और आपको उसने 67.2, ये 67.2 है, बेटा यहाँ से कट हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपने इसको 67.2 ही कंसिडर करना है। तो 67.2 है ये। अगेन आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ उसने राइट एंगल का साइन यूज नहीं किया हुआ था, तो मैंने, चलो यूं करते हैं कि हम वो इसको लगा लेते हैं यहाँ पर राइट एंगल का साइन। राइट एंगल यूज करते हैं यहाँ पर हम। ये जी राइट एंगल बन गया। ये जब आप फिगर बनाएंगे तो आपने राइट एंगल से इसको जरूर शो करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, हमें एल फाइंड आउट करना था, तो साइन थीटा आपके पास हो जाता है। अगर इसी फिगर को आप देखें, आपको कैसे पता चलता है कि साइन लेना है, टेंजेंट लेना है, या क्या लेना है? ऑब्वियसली which two sides are given or one side or angle are given, you need to relate the missing one with that. Here you are given perpendicular and you are to find the hypotenuse, so obviously perpendicular and hypotenuse having the ratio which is called sine, because sine theta is equal to perpendicular or hypotenuse, which is BC over AB, and so sine 55 degrees is equal to 67.2, actually it is 67.2 over L. तो आपने ये जो मिस्टेक्स हैं इनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कट करके लगाया है मैंने, खुद से टाइप नहीं किया, तो इसलिए आपको ये कुछ कहीं ये नजर आएंगी, इनको करेक्ट करना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो L आपके पास हो जाएगा, L को आप इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 55 डिग्री को आप इधर ले आएंगे, 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री, और इसको आप
कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स L इक्वल टू 82.03 मीटर, जो कि होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर. Then look at question number 6. Question number 6. When the angle between the ground and the sun is 30-degree, flagpole casts a shadow of 40 meter long. Find the height of the top of the flag. तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप पहला कर चुके हैं. यहाँ पर फिगर बना दी है मैंने आपको कंप्लीट, आप इसको खुद से करेंगे. फिगर बना दी है, ये पोल है, इसको BC से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, और इसका जो शेडो है वो 40 मीटर है. यहाँ पर एंगल आपके पास जो है वो 30 गिवन है. हाइट हमारे पास नहीं है. H/40 करेंगे, आपको खुद पता होना चाहिए कि H/40 क्या होता है. आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप खुद सोल्व करेंगे. Look at the last question of this exercise, which is included in the smart syllabus. I think it is question number 9. P and Q are 2 points in a line with the tree. The distance between P and Q be 30 meter and the angle of elevation of the top of tree at P and Q be 12 degree and 15 degree respectively. Find the height of the tree. तो यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं इसकी. ये देखें जी, ये आपका ट्री है AB से जिसको रिप्रेजेंट किया है, और ये 2 पॉइंट्स P और Q जो ट्री की लाइन हॉरिजॉन्टल बनती है उस पर हैं ये P और Q, and they are 30 meter apart, so PQ is equal to 30 and this QA is unknown, so we have taken it x. तो फिर ये होल आपके पास जो PA है ये x plus 30 हो जाएगा. और एक्चुअली वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो उसको एज से ही रिप्रेजेंट कर लिया है. कोई भी आप लेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं. और एंगल ऑफ एलिवेशन जो हैं वो रिस्पेक्टिवली का देखें यहाँ वर्ड यूज हुआ है. 12 एंड 15 है, ये 12 और ये 15. और वैसे भी माइंड में रखिएगा आप कि जो एंगल बाहर वाली साइड पे बनेगा इस तरह की सिचुएशन में, और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जो एंगल आउटसाइड होगा वो स्मॉलर होगा और जो एंगल आपके पास इनसाइड होगा वो ग्रेटर होगा. अगर आपको यहाँ से ना भी समझ आए, अदरवाइज P के साथ जो अटैच है, ये देखें रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है तरतीब से आपने जाना है. P के साथ 12 अटैच है और Q के साथ 15 अटैच है. तो फिगर आपके पास ये है. अब फिगर को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले आप टेंजेंट थीटा ले लेंगे, और आपने क्या किया, लेट h बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड x बी द डिस्टेंस ऑफ P to A. ये हम चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AB ओवर AP. ये किस में ले रहे हैं आप टेंजेंट थीटा? ये फुल आपका जो ट्राइंगल बना हुआ है, फुल बाहर वाला जो ट्राइंगल है उसमें ले रहे हैं. चले यहाँ पे मैं ये ट्राइंगल दोबारा से आपको बना के दिखा देती हूँ. थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आमतौर पर वैसे इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता तो नहीं है. अगर आप थोड़ी देर के लिए ये BQ को यहाँ पे इग्नोर कर दें, BQ को इग्नोर करते हुए यहाँ पर अगर आप ये समझ लें कि ये आपकी जो है वो ट्राइंगल है, फुल ट्राइंगल. ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका B. ये B है, ये आपका A होगा. ठीक है जी, और ये आपका है P. तो ये फुल ट्राइंगल को आपने ले लिया है. ऑब्वियसली जब आप वो टेंजेंट 12 वाली बात करेंगे तो फुल ट्राइंगल को अलहदा से हमने ले लिया है यहाँ पर. तो ये आपके पास था x plus 30, x और प्लस और ये 30. और ये है आपके पास h. तो इस तरह से आपने इसको कंसिडर करना है. h ओवर x plus 30 आपके पास टेंजेंट 12 के इक्वल होगा. यहाँ पे मैं टेंजेंट 12 भी लिख देती हूँ. 12 डिग्री है ये. ठीक है जी, ये इस तरह से बेटा आप लोगों ने करना है. तो आपके पास
यहाँ से एच और एक्स दोनों अननोन है, तो क्या करेंगे आप फिर, दोबारा मैं पॉइंटर को चूज करती हूँ, आप यहाँ पर टेंजेंट 12 को इधर ले आएंगे और एच ओवर टेंजेंट 12 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास इस टेंजेंट 12 की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 0.2125 हो जाएगा, और इस 30 को आप इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि दोनों में x आएगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि x की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ h की जरूरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरह से अब आपने सिर्फ इनर ट्राइंगल को लेना है, ये जो इनर ट्राइंगल आपका बन रहा है ना ए बी क्यू, सिर्फ इसको कंसिडर करना है। तो इसकी जो साइड्स बनती हैं वो एच एक्स और ये 15 डिग्रीज का एंगल होगा। तो यहाँ से आप एक रिलेशनशिप लिखेंगे ए बी ओवर ए क्यू विच इज इक्वल टू एच ओवर एक्स, और ये टेंजेंट 15 के इक्वल होगा बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ये। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये नंबर 1 है आपके पास एक्स की वैल्यू, नंबर 2 में एक्स की वैल्यू, और फिर आप इन दोनों को कंपेयरिंग कर देंगे। इनकी कंपेयरिंग करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आप एच वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे, एच को कॉमन कर देंगे, और ये इक्वल टू 30 सारा चल रहा है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटिव है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये पूरा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ये 1/.2125 सारा कैलकुलेटर की गेम है बेटा। तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा पूरा सोल्व करने के बाद, एच इक्वल टू 30/0.9730। तो इस तरह से एच आपके पास आ जाएगा 30.9 मीटर। तो ये बेटा आज का आपका लेक्चर था जिसमें आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखी है, राइट एंगल ट्राइंगल को हम कॉमन लाइफ में क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ साइन और कोसाइन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।